Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. And today we are really happy and excited to interview Ojas Powar, scoring 100 percentile in the MAH CET 2026 for BBA, BCA, BMS, and BHMCT. We are really excited to know what is the way, how he prepared and got to the way of 100 percentile. So let's dive in conversation with him. So firstly, welcome to Ojas. Okay, really great to have you over here and really great to see that you have got an 100 percentile. Okay. Thank you, sir. मुझे सबसे पहले ये बताओ, हाउ डिड इट फेल टू हैव एन 100 परसेंटाइल? क्या ये It was टारगेट था कहीं? नहीं ऐसे दिमाग में था नहीं कभी बिकॉज व्हेन आई गेव द एग्जाम इट वाज रियली गुड बट कितना भी अच्छा एग्जाम को आई वुडंट थिंक कि 100% आएगा देयर बी ऑलवेज समवन बेटर देन मी गिविंग द एग्जाम सो आफ्टर द रिजल्ट्स आपका पोर्टल से चेक किया कि 89 आ रहा है सो आई वाज लाइक ओके। ठीक है 98 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट किया था प्रेडिक्टर से बट डिड नॉट एक्सपेक्ट 100% इट वाज रियली अमेजिंग ओके, 100% दैट्स ला भी सकता है ऐसा हाँ, आपने एक चीज ऐसे मेंशन किया था, लाइक आई विल जस्ट गेट टू दैट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट, सो क्या टारगेट था कि मतलब टारगेट क्या था कि मतलब कि इतना तो आ ही जाएगा? मतलब मेरे को 98 99 तो लाना था दैट वाज ओके। अ सेफ स्कोर फॉर मी क्योंकि मैंने प्रिपरेशन लास्ट 4 5 डेज में किया था सीईटी स्पेसिफिक व्हाई वाज इट सो कि लास्ट फ्यू डेज में प्रिपरेशन किया, लाइक? बिकॉज आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट एस सिम्बायोसिस का एसएटी देन ओके। सीयूईटी एज वेल ओके। तो क्यूए एंड एलआर तो आईपी मैट सिलेबस में हो गया था एब्सोल्युटली, that एब्सोल्युटली। I had to see your videos, previous videos की उसमें सीट आईपीमैट का इट्स रियली यूज सिलेबस तो या उसमें से व्हाट इज द एब्सोल्युटली। स्पेसिफिक सिलेबस जिसका ज्यादा वेटेज आ रहा है इन सीईटी सो हम्म। दैट वाज द मेन एरिया व्हिच आई फोकस्ड बाकी 80 to 90% ऑफ द टाइम आई वाज डूइंग कंप्यूटर बेसिक्स एंड जनरल एब्सोल्युटली। अवेयरनेस सो हाउ डू डिड दोज एग्जाम्स गो, मतलब वो एग्जाम्स कैसे गए आपके टोटल? एसईटी तो हो गया क्लियर बट आईपीमैट का कट ऑफ आई लॉस्ट ड्यू टू 3 to Which 4 IP mat did you opted for? इंदौर Indore. Okay. I lost the cutoff by I guess 12 marks, so that's I guess 3 to 4 Oh, questions. okay. And That what was about the English that CET? CUET I got 866 out of 1000. So Okay, best. okay, okay. So That's that's a little low for good college such as SRCC, oh, but I'll see for Mumbai colleges right now. okay. That's really good. Mumbai में तो you are most welcome to any college, and every college is available Yeah. now for you to go. So like last 1 week में जैसे अभी आपने prep किया, Hmm. मतलब was it like कि ये एग्जाम लेट, मतलब पता चला कि ऐसा एग्जाम होता है, या फिर इट वाज कि लाइक एज लाइन पे एकदम रखा हुआ था? नहीं the thing is I always study in the last crucial area क्योंकि जो pressure I need that pressure to study I can't study for a month before the exam क्योंकि उतना quality study होता नहीं है मेरे से to be honest. So a week prior, I called my brother. He also gave the CET last year. He's a year elder than me. So he Okay. told me he studied from Vision Academy and all that. So I just searched the channel and started seeing the 2025 playlist. Okay. The so I just looked onto it. Then I started giving mocks and everything. I also purchased the official CET mocks. So it was Okay. quite easy for me. I get that. So what was the schedule to study for this then? I just I used to कितना study आवर्स full पढ़ाई किया आपने, मतलब डेली? जैसे लास्ट यू स्पेसिफिकली मेंशनड लाइक 1 वीक पढ़ा था। 1 week. Yeah, हाँ, तो 1 वीक में कितना आवर्स पढ़ाई किया इसके लिए? I say daily 3 to 5 hours. Just थ्री that's टू it. फाइव आवर्स दैट्स इट? 5 hours. क्योंकि QNLR already हो चुका था. So I हाँ। just had to and GAT I was studying for CUET. ओके, So आई that was अंडरस्टैंड the दैट। या used it एब्सोल्युटली। to do it. Yeah. So the main was computer basics because I had no contact with computer basic studies in my 11th 12th. ओके। So I had zero knowledge. हम्म। तो एक जरा इसी से ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ना बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हम पढ़ाते हैं तो हमेशा वो, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी द गाइडलाइन। जब 2027 के लिए स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो आई पुट दिस एज एन गाइडलाइन टू देम कि ये ऐसा हमारे जो 100% स्कोर जिन्होंने किया, दिस इज फ्रॉम हिम डायरेक्टली। एज यू आर मेंशनिंग इट, 4 to 5 hours स्टडी, ठीक है। You already prepped up for the LR and the quants because you were preparing for IP MAT and so on. यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको रेट करते हैं कि उनके लिए एलआर या फिर कॉन्ट्स जो बहुत डिफिकल्ट है। हाउ वुड यू रेट द सीईटी एग्जामिनेशन का एलआर एंड कॉन्ट्स?
दैट वाज वेरी लकी फॉर मी कि आई वाज इन 29th फर्स्ट शिफ्ट, तो हाँ उसमें क्वांट्स वाज वेरी डिफिकल्ट, सो स्टूडेंट थॉट कि वो सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट हम्म है, और हाँ दैट वाज वेरी इजी फॉर मी, मैथ्स एंड क्यूए इज लाइक एब्सोल्युटली piece of cake for me. So that helped me to get 100%, and that was a luck factor. यस यू आर इन 29th फर्स्ट शिफ्ट राइट 20 Yeah, 29 also first. majority of the question जो रीजनिंग एंड अरिथमेटिक का सेक्शन था उसमें कॉन्ट्स क्या आए थे मेजोरिटी ऑफ द Cons, and that is basic IP math preparation. एब्सोल्युटली So और easily हो गया था. वो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट भी नहीं थे व्हेन वी आल्सो लुक्ड एट टू द पेपर बाद में जब आया तो वी लुक्ड एट तो बिकॉज जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स वर लाइक कि सर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया It was something out of the box उनके लिए. तो हाँ after the exam first I मैंने आपका लाइव भी देखा कि कैसे रिस्पॉन्स आया बाकी सबका. हम्म जस्ट उसमें भी आपने वही बोला कि बच्चों को कौन थोड़ा टफ लग रहा है, बाकी तो इजी था. हम्म कंप्यूटर बेसिक्स 100% वाज फ्रॉम यू. ओके आपसे सब किया था, आपसे सब आया. सो इट वाज ओके रियली ग्रेट वो तो. that that's really great to hear as well okay really glad कि आया था वहां से तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है ना आई हैव सीन स्टूडेंट्स डिसाइडिंग अ पेपर नॉट फ्रॉम द लेवल ऑफ द क्वेश्चन बट बाय द सब्जेक्ट ऑफ द पेपर कि हम्म. अगर क्वांट्स आ गया तो पेपर डिफिकल्ट है अब हाँ. उसमें चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन ही क्यों ना पूछ ले इट वाज बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उतना ही यस था, बट एलआर कम है इसलिए बच्चों को ज्यादा टाइम गया रहेगा. आई डोंट नो हम्म कि हम्म वही रहेगा अपनी बेसिक पॉइंट यस टाइम एंड मैनेजमेंट में. व्हाट अबाउट जीके यू सिंस यू स्कोर्ड 89 आपने हम्म. 89 स्कोर किया इन दैट तो व्हाट अबाउट जीके बिकॉज 18 9 लाने के लिए तो जीके जीके आएगा. भी कर जीके में गेस मेरे को सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आए बाकी, क्योंकि अराउंड 8 क्वेश्चंस आई गेस केम फ्रॉम द महासीईटी ऑफिशियल मॉक इटसेल्फ. ओके Yeah, so 50% तो I remember the answer कि last night मैंने full revise किया था, all 6 mocks I did the 20 questions to 120 questions. Out of that 10 questions तो came from there. The different 10 questions I knew because I was ओके already studying from 3 4 months for GAT. हाँ जी And एटी में then, तो आता the है last revision lectures were from your side. ओके ओके दैट तो ये जो एग्जामिनेशन के पहले हमारा जो जीके वाले सेक्शन के लिए स्पेशली जो बहुत बड़ा एज इन क्वेश्चन मार्क होता है कि कैसे क्वेश्चन हाँ हम सर. आर वी गोइंग टू डील इट सो पोस्ट एग्जामिनेशन क्या फील हुआ कि लाइक प्रिपरेशन एग्जाम के से पहले एंड एग्जाम के बाद में क्या फील हुआ जीके सेक्शन को देख के बिफोर द एग्जाम सारे क्यूए छोड़ के बाकी सारे एग्जाम के लिए आई वाज वेरी नर्वस, ओके क्योंकि द सिलेबस इज अनलिमिटेड जी के लिए, कहीं से भी आ सकता है, हाँ तो राइट एब्सोल्युटली प्रेशर रहता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा. बट आफ्टर द एग्जाम बहुत सेटिस्फाइड था विद द रिजल्ट जो हुआ एग्जाम में. ओके दैट्स एंड हाउ सेटिस्फाइड आर योर पेरेंट्स विद द रिजल्ट नाउ मैं रियली हैप्पी, मतलब किसी ने, क्योंकि मैं तो कभी इतना पढ़ता ही नहीं था, मतलब लास्ट वीक में सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा हूँ. अरे नहीं ऐसा कैसे पढ़ते नहीं तो नहीं, 100% कैसे आता एंड एक्सपेक्टेड लेट्स कोई नहीं था. बट या बट दिस इज नॉट अ केस ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता हाँ, बट क्योंकि बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो चुका था, दैट्स द रीजन. सीईटी हम्म स्पेसिफिक आई एम जस्ट सेइंग 4 to 5 days. अच्छा यू हैव गॉट योर स्कोर फॉर सीयूटी जीटी जीएटी पेपर या जीएटी आई गॉट 185. 185 250, हाँ, दैट इज लिटिल बिट लो. मुंबई में तो कोई भी कॉलेज हो जाएगा आउट ऑफ महाराष्ट्र सो इफ यू लुक अराउंड ओके अच्छा टेल मी वन थिंग कि मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते थे हम्म. ओके सो व्हाट वाज योर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कि 120 मिनट्स टाइम था 120 minutes वॉज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, क्योंकि मेरा हम्म 60 70 मिनट्स में इजीली हो जाता था कंप्लीट पेपर. फर्स्ट आई राइट यूज्ड टू डू क्यूए बिकॉज दैट हम्म वाज माय फोर्टे. देन उसके एब्सोल्युटली बाद जीके एंड कंप्यूटर बेसिक्स. इन द लास्ट आई यूज्ड टू डू इंग्लिश बिकॉज दैट वाज अ बिट टफ फॉर मी ग्रामर, कि आई डिड नॉट स्टडी मच फॉर दैट. ओके Last में the revision lectures were there which you uploaded about basic grammar, then little हम्म vocab. So those helped a lot. ओके A few questions came from the lecture as well. ओके I don't remember the questions exactly, but yeah, there was नो quite. वरीज टू दैट नो नो वरीज तो लाइक एग्जाम डे का जो एग्जाम डे था लाइक वहाँ पे तो मॉक्स हम करते थे लाइक यू वर अटेम्प्टिंग द मॉक्स फ्रॉम द सीईटी वेबसाइट CET lecture, सीईटी yeah. सेल का ओके तो एग्जाम डे में एंड लाइक नॉर्मल डेज जब हम घर पे प्रैक्टिस करें तो उसमें एंड एग्जाम डे में क्या डिफरेंस फील हुआ उतना डिफरेंस नहीं था क्योंकि आई यूज्ड टू स्टडी आइसोलेटेड थोड़ा, बट हाँ आफ्टर यू गो देयर थोड़ा हम्म प्रेशर आता है कि बिकॉज यू सी द हम्म अदर स्टूडेंट एज वेल, दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर आल्सो सिटिंग देयर. हम्म So there's हम्म a little competitive experience, you, and हम्म that was the first exam I gave after my boards.
So that was the Okay. first competitive exam. So it Okay. was a little new, but not that bad, I'll say. It was a good So experience. how did you manage that nervousness and everything? The I didn't feel very nervous on the exam day. It was Mm. everything prior to the exam because it was just a 1 hour drive, so traveling wasn't an issue. Okay. So the overall pressure wasn't that much, and the exam hall was quite decent. So the teachers there are really good. Where There did you got the center, by the way? Bhiwandi, Bhiwandi. Okay. Bhiwandi. But it was the morning shift, so traveling wasn't an issue. Okay. Okay. Got that. Got- So you told me like you found Vision Academy. Okay. I'll just come over here So, through one of your cousin. but cousin brother, Yeah, cousin brother. yeah, he's in So Arepoda right now. okay. So he's in Aripoda right now. Yeah. Okay. So like how did you felt like preparing with us? Like or else let me ask it precisely like was it even like how much worthful did you find studying with us? It was worth every minute I gave watching your videos, honestly, Okay. because computer basics from 0 to 100, everything was from you. Hmm. And QA also, I got to know what type of questions come in the exam. So Hmm. I had to just revise my notes that I have to this topic, that Right. topic. So it was quite easy. And GK also was already prepared. So I really GK we liked do the revision understand. notes. Hmm. With DK we do it's in vast syllabus तो Yeah. उसमें ये तो होता ही है कि क्या आ जाएगा इवन वी डू नॉट नो एट टू द एंड ऑफ द डे Yeah. Yeah. कि क्या आ सकता है वहां पे Yeah. तो ओजस जस्ट लेट मी नो वन थिंग कि अगर एक लेट सपोज करो 2027 में जाने वाला एक कैंडिडेट है ओके एंड ही इज अबाउट टू स्टार्ट हिज प्रिपरेशंस फॉर दिस एग्जाम तो व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम हाउ मच टाइम दैट कैंडिडेट मस्ट गिव मतलब कितना समय में प्रिपेयर हो सकता है एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी एंड हाउ शुड ही प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन It depends on the student to student ki what is their एब्सोल्युटली capacity. But I would say 3 to 4 hours quality study, not just you're sitting and just watching the video. You need to be 100% attentive, listen to the key points what you're saying, and preparation. I can say that 1 month is more than enough for any student to राइट complete CET. Yes, absolutely. Because that is the same question what students ask us. A definite case है. Because because Yes, go. after the board exam, no one is in the mood to study. हाँ, हाँ, absolutely. सीटी Right. कौन पढ़ेगा? It's like वो mindset हो जाता है बच्चों का, but 1 month is more than enough. So do you think like even if a candidate, a student after board exams, वो अगर इस exam के लिए पढ़ना start करे तो he can conquer the exam very easily? Yeah, but he needs to be strong base level. The हाँ. base level you need to know cons from prior, Hmm. that stuff. And GK I'll suggest do more than a month preparation. Yes. Computer basic is quite predictable, I'd say. हाँ. It's आपने predictable जो because पढ़ाई की हाँ, that was quite predictable. yes, absolutely, absolutely. That's really great to know from you. So what are your future plans now? Now अभी CET का cap round and all the हाँ admissions. वो तो ठीक है वो तो हो जाएगा वी आर देयर फॉर दैट डोंट वरी फॉर दैट ओके वो तो करा देंगे लाइक एज इन फ्यूचर प्लान्स व्हाट कोर्स आर यू लुकिंग फॉरवर्ड एंड लाइक आफ्टर दैट व्हाट यू आर लुकिंग पोस्ट टू दैट I've been looking into finance courses, so ओके I'm planning to do CFA, a professional ओके course. या I have an elder sister who has completed and ओके is in the last level. So हम्म I'll talk to her, take a few key points, guidelines, and move on. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ओके ओके दैट्स अ गुड चॉइस बाय द वे दैट्स अ Thank you. गुड चॉइस सो यू आर looking for an admission into Mumbai only right Yeah, now Mumbai colleges because it's okay quite near. I would prefer close college. okay that's really great okay just a little bit of I'll just ask you a few questions as a quick round session Yeah, just let me what is your favorite subject mathematics and toughest subject for this examination? for this examination. Yeah. GK, general What would be knowledge. your dream college? Jai Hind, NMIMS, those two. Okay. Uh, SVKM. One word that would define your journey for the CET preparations. One word. Quite simple actually. Simple. Okay. That's a really good Smooth, one. Good smooth actually. answer. Smooth. 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 Okay. And one word, how would you describe Vision Academy? The best, I'll say. Okay. I Thank you don't very much. have any other YouTube channel that even comes close to what you have done for students. Okay. Seriously, I can't even think of other channels. Thank you very much for the compliments. Like
if it helps you, we're really happy with for that. Okay, our sole purpose is to help the students, like howsoever they are preparing it, like through the batches, through the YouTube, howsoever we just want them. And क्लटर नहीं रखना चाहते हैं हम उसमें, दैट इज द रीजन कि यू मस्ट बी सीइंग कि हम ज्यादा अपडेट भी नहीं करते हैं कि एग्जाम हम्म। रिजल्ट 4 दिन में आने वाला है। आ हाँ। गया तो यू हैव द नोटिफिकेशन, नहीं है या। तो नहीं। जस्ट स्टे काम, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज हाँ। से टू दैट। लाइक क्या प्रोसेस शुरू होने वाला है तो you will be guided. Okay, we just try to keep it a bit clutter free कि हाँ। actual में focus रह पाए हम, and let's do what it is to be done. Okay, thank you very much, Ojas, for your time. Okay, and थैंक we यू सर। really congratulate you once again to you, and hearty congratulations. Even I was really happy to see your results. Okay, like हमने भी जब आपका result देखा, we were really happy to see your results. Like कि okay, we have got because down in the line for the 3 years, this has been third year for this examination to be into the row. The first year we got in candidate 99.99, second year we got in candidate 100 percentile, and so last year eight candidate, and this year finally we got three candidates coming up with 100, and you being the one. And very great to see, like कल के दिन में summary भी वैसे release हुआ था तो या। CET cell has ranked you on the fifth like top five, as in. So that's just based upon the second criteria. Otherwise, we consider that is the rank one for everyone out. So it's really great to see you at to the top of the line, at to the like state topper or all India topper, because the examination is conducted all India level. So या। really great to see that as well. Okay, so we are also really happy, and we are there to help you out for each and everything what goes ahead. Okay, and thank you very much for sharing your time with us. थैंक यू सर, रियल थैंक यू। Really happy. Any questions for me, for you to ask? I was going to ask, what are the future, what are the best three colleges which I should opt for in BBA? With, BBA. yeah, market, we have, which have a good market value. Okay, so one can definitely be Jahan. Jai Hind. They have, Yeah. I guess, with TCS some tie-up, right? Yeah. Internship. Yeah. So if you're looking ahead for one of the best colleges, like because the top three colleges in Mumbai that we have is one is NM, and second is Mitibai, and third is Jahan. Jai Hind. So NM and Mitibai is for BMS. And looking forward to the BBA category, if you're looking at it, the Jahan would be the best one for you Yeah. through the CET. So that can be the best. We do have other colleges as well, but the best of the line can be Jahan for you directly. What would you say? What is better to do, from BMS from Mitibai or BBA from a Jai Hind? Or are they on the Both same level? both the colleges are at to the same level, not much of a difference into it. Okay, so if you are very much exams like the course specific, if you're going around with BBA, let's suppose, so you should be choosing Jahan. That will be a much more better option for you then, because बहुत ज़्यादा difference नहीं आएगा. Hmm. Okay, and even if you look at the cutoff of both of the colleges is 99.57 for like same BMS के लिए consider करें, Right, because right. Metibai is at to BMS, so BMS का 99.57, and Jahan is also, if I'm not wrong, it's 99.57. So cutoffs are also Yeah, equivalent I to saw same. the previous cutoff. All of them are 99 and some Yeah, point percentage. Right? 99.5 plus. Okay, Yeah. the highest which goes is NM, 99.7 के आसपास में जाता है for Hmm. BMS. Okay, but it serves BMS, not BBA. Yeah. Yeah. So if you are about to make up a decision, let's suppose Jai Hind or NM for if your course switch करके, तो NM को हम suggest may भी कर सकते हैं थोड़ा सा. I've actually also given NPAT. So I'm Okay. waiting for the result. Next week, probably the results will Oh, come that's up. really great. Okay. Yes. तो हाँ, तो उसके through भी like you'll be Yeah. having. And then I guess I'm seeing for IPM program, BBA FinTech is also great. I've heard Yes, about. yes, absolutely, absolutely. So if that opens up, so that is an absolutely new world to you. Okay, that will be a really good option in once again coming up. Okay. So we are here always for any queries and every queries. So do let us know. Okay. And what how whenever your results comes up for the NPAT, do also let us know about that. Okay. Do Yes, sure, sir. yeah. Yes. Chalo, thank you very much. Thank Really you, good to sir. talk to you. Okay. Thank you. Thank you very much for giving us the time. Thank you very much, Ojas. Thank Thank you. you, sir.